Hello everyone, this is Deepak Joshi, and today we are going to try another problem of lead code, that is trapping rainwater. It is a hard type of question. Now, I want all of you to go through this particular problem statement. It states that we have given n non-negative integers representing an elevation map where the width of each bar is 1. Okay, and we have to calculate how much maximum water can be stored in the graph, basically. Like if we have given this type of height array, okay, which is representing the height of the cells. The first one is 0, then 1, then again 0, then 2, then 1, then 0, then 1, then 3, then 2, then 1, then 3, then 1. Okay, I'm sorry, 2, then 1. Okay. And we have to calculate the maximum amount of water it can store. So it can store water only if there is a wall left of it and there is a wall or a cell right of it. So here 1 unit of water, 1 unit, and combining all these cells comes out to be 4 unit. 4 plus 1, 5, and 1 unit there. 6 units. Okay. So our answer will be 6. Problem statement seems very easy, but and believe me, it is easy if I tell you the approach, how we are going to approach it. First, the intuition of this particular question is I am here is able to observe that it is the amount of water which is going to be stored is the minimum of the left height and sorry minimum of the maximum of left height and minimum and maximum of right height. What do I mean by this? Like look at this particular index जहाँ पे हमारा height 0 है, इसकी लेफ्ट पोर्शन में मैक्सिमम हाइट कितनी है? वो है 1, और राइट पोर्शन में मैक्सिमम हाइट अभी के लिए कितनी है? दैट इज 2. ठीक है, अभी कंसिडर करते हैं 2. ओके, नाउ इन दोनों का मिनिमम कितना है? 1. ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है? 0. तो 1 माइनस 0 इज 1, तो ये 1 यूनिट स्टोर कर रहा है यहाँ पे. सिंपल. हम फॉर्मूला क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, मिनिमम ऑफ लेफ्ट हाइट, ठीक है, कॉमा राइट हाइट. और ये जो राइट हाइट और हमारी, या फिर मैं इसको लेफ्ट हाइट ना लिखते हुए मैक्स लेफ्ट लिखता हूँ. ठीक है, दैट इज मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट हाइट्स एंड मैक्सिमम ऑफ राइट हाइट्स. ठीक है, माइनस द हाइट एट विच करेंटली इट इज स्टैंडिंग. ओके, तो भैया आपने यहाँ पे 2 की बोला, इट विल बी 3. मैंने कहा ओके, लेट अस टेक द राइट हाइट एज मैक्सिमम 3 और इस साइड में 1. तो 3 और 1 में मिनिमम है 1. 1 माइनस हाइट करेंटली अभी 0 थी, तो इट इज गोइंग टू स्टोर व्हाट? इट इज गोइंग टू स्टोर my 1 unit of water. Now if I talk about this particular area, यहाँ पे कंपेयर कर लो. यहाँ पे हमारा लेफ्ट जो मैक्सिमम है वो 1 है, राइट मैक्सिमम कितना है? 3. 3 माइनस 1 इज 1. ठीक है, एंड 3 माइनस 1 इज 2, एंड वो खुद 2 हाइट पे, तो 2 माइनस 2 इज 0. तो हमें यहाँ पे वाटर नहीं मिलेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ. इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, तो यहाँ पे क्या होगा? देख लो, लेफ्ट मैक्सिमम कितना हो गया? ये 2 हाइट, और राइट में अभी भी 3 चल रहा है. तो 2 3 माइनस 2, 3 और 2 में से मिनिमम कौन है? 2. ओके, और अभी ये 1 हाइट इसकी खुद की है, तो 3 माइनस 2 इज सॉरी 2 माइनस 1 इज 1. तो यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ वाटर है. ओके, अगर मैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स की बात करूँ, लेफ्ट मैक्सिमम इज 2, राइट मैक्सिमम इज 3, और ये करंटली 0 पर है. तो 3 माइनस 2 इज 1 एंड 0. तो ये 1 यूनिट ऑफ वाटर स्टोर कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, क्या ऐसा ही है? हाँ, ऐसा ही है. ठीक है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही कर रहा हूँ. ठीक है, 3 माइनस 2 एंड ओके, बिल्कुल सही है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? हमारा जो हमारा लेफ्ट हाइट मैक्सिमम है, दैट इज लेफ्ट मैक्स है, वो हमारा 2 है, एंड राइट मैक्स इज 3. तो 3 माइनस 2 इज 1, एंड यहाँ पे इसकी हाइट खुद की हमारी कितनी है? दैट इज 1. तो 3 माइनस 2 नहीं, मैं गलत कर गया एक्चुअली. देखो, यहाँ पे ध्यान से समझना. यहाँ पे कितना वाटर स्टोर किया? मैंने एरर कर दिया. यहाँ पे कितना वाटर स्टोर हुआ था? देखो, लेफ्ट मैक्स था 2, और यहाँ पे राइट मैक्स इज 3. तो 3 और 2 में मिनिमम कौन है? 2. ठीक है, एंड इसके खुद की हाइट 0 है, तो 2 माइनस 0 दैट कम्स आउट टू बी 2. इसीलिए यहाँ पे एक ये यूनिट और एक ये सेल फिल्ड अप है. एंड इस पोजीशन की बात करें, इस हाइट के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे इसके लेफ्ट मैक्सिमम इज 2 एंड द राइट मैक्सिमम इज 3. तो 3 और 2 में मिनिमम कौन है? 2, और इसकी खुद की हाइट 1, तो इट इज गोइंग टू स्टोर 1 यूनिट. ठीक है, एंड फाइनली अगर मैं इसकी बात करूं, तो यहाँ पे आप खुद कंपेयर कर सकते हैं. लेफ्ट मैक्सिमम इज 3 एंड राइट मैक्सिमम इज 2 ओनली. तो 3 2 में छोटा 2 है, एंड इसकी खुद की हाइट 1 है, तो 2 माइनस 1 इज 1. तो 1 यूनिट ऑफ माई वाटर. ओके, मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है,
जिन्हें नहीं समझ में आया वो प्लीज इसे ध्यान से सुनिए, मैंने लिख के नहीं दिखाया कुछ भी। अब इसको अप्रोच करें, कैसे करेंगे? लाइक इनिशियली ब्रूट फोर्स ट्राई करते हैं, ठीक है? ब्रूट फोर्स जैसा हमें समझ में आता है हम वैसे ही करेंगे। मैं क्या करता हूँ सबसे पहले, लेट अस टेक दिस एज ए आर आर, थोड़ा टाइम बचाएंगे, ठीक है? ए आर आर डॉट साइज करेंगे। ओके, आई एम सॉरी। नाउ मैं यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल बनाऊंगा विच इज गोइंग टू स्टोर माय फाइनल वाटर कंजम्पशन, ठीक है? एंड हम एक स्टार्ट करेंगे फॉर लूप विच विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड गो टिल माय एंड। ओके, नाउ यहाँ पे आते ही मुझे कैलकुलेट करना है लेफ्ट मैक्स एंड राइट मैक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ith इंडेक्स। लेट अस से मैं इस इंडेक्स पे खड़ा हूँ, ठीक है? तो इस इंडेक्स का लेफ्ट मैक्स लाना है मुझे और इस इंडेक्स का राइट मैक्स लाना है। तो पहले वो कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए हम एक वेरिएबल j ले लेते हैं एंड वी विल असाइन इट द वैल्यू i। ओके, फॉर द लेफ्ट मैक्स मैं एक लेफ्ट मैक्स बना लेता हूँ, ठीक है? दैट विल बी इक्वल टू, अब मैं छोटे रखूंगा, ठीक है? लिफ्ट मैक्स इक्वल्स टू जीरो। आई एम नॉट फॉलोइंग एनी टाइप ऑफ कैमल केसिंग हियर, एंड आई विल मेक अ राइट मैक्स ऑल्सो, जो जिसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। ओके, इफ आई टॉक अबाउट कि मैं लेफ्ट मैक्स कैलकुलेटिंग लेफ्ट मैक्स, हमें कैलकुलेट लेफ्ट मैक्स करना है, वो कैसे करेंगे? सिंपल, अगर हम अभी ब्रूट फोर्स है, जैसे जैसे दिमाग में आएगा वैसे वैसे करेंगे। हमें एक वाइल लूप या फॉर लूप लगाना चाहिए, हम वाइल लूप लगा लेते हैं, वाइल जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो तब तक करो, कैसे करते हैं? हमें क्या करना है? सिंपल, लेफ्ट मैक्स विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट मैक्स खुद के एंड जो इंडेक्स आ रहा है उसके एंड ए आर आर ऑफ जे, सिंपल। और हमें क्या करते जाना है? जे माइनस माइनस करते जाना है, सिंपल। ओके, नाउ यहाँ हमारा लेफ्ट मैक्स कैलकुलेट हो चुका होगा एंड अगेन आई एम गोइंग टू असाइन माई जे टू आई बिकॉज आई हैव टू कैलकुलेट माई राइट मैक्स calculation. Okay, how I am going to perform this particular thing? Simple, while j is greater than j is less than n. Okay, calculate right max, RIGHT, right max will be equal to maximum of my right max comma my ARR of j. Simple, as simple as that. And I have to increment j so that it moves forward till it is less than n. यहाँ पे आते ही I have to apply my formula which I have calculated earlier, that answer, that is the water stored, will be equal to plus equals to minimum of my left max, ठीक है? लेफ्ट मैक्स एंड राइट मैक्स माइनस उसकी खुद की हाइट, ठीक है? दैट इज ए आर आर ऑफ I, not ARR of J. Understand? Understood? Okay. Now, I have to return what? I have to return my answer. As simple as that. तो let's run this particular piece of code and check कि हमने कितनी mistakes की हैं, नहीं की। Okay. तो अब हम इसे submit करेंगे and guaranteed this particular approach, the it has O of n square time complexity. So TLE तो आना ही था, ठीक है? सब कुछ है लेकिन TLE ना आए। TLE नहीं आएगा तो सीखोगे कैसे? ओके, तो अब क्या करना पड़ेगा? इश्यू आ गया। देखो, थोड़ा समझो, जो मेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम खा रहे हैं वो हमारा इन वाइल लूप्स में जा रहा है फॉर कैलकुलेटिंग द लेफ्ट मैक्स एंड द राइट मैक्स। सो अच्छा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इस कोड की? नथिंग, ठीक है? वी हैव नॉट टेकन एनी एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर, सो दैट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज कांस्टेंट, ओ बिग O of 1, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O of n square. Now we have to reduce the particular time complexity of this we have to reduce the time complexity of this particular code. How we are going to achieve this thing? We are going to achieve by calculating left max pehle and right max pehle. So how we are going to achieve left max pehle and right max pehle? It will be by calculating it prior beginning my for loop, ठीक है? फॉर लूप को स्टार्ट करने से पहले ही लेट्स कैलकुलेट माई लेफ्ट मैक्स एंड राइट मैक्स। हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग? सब कुछ नीट एंड क्लीन करके करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करते हैं? लेट्स टेक एन एरे, ठीक है? लेट्स टेक टू एरेज फॉर कैलकुलेटिंग माई लेफ्ट मैक्स एंड फॉर कैलकुलेटिंग माई राइट मैक्स। लेट इज कॉल्ड देम प्रीफिक्स, ठीक है? Prefix will contain the left maxes है ना, for a particular index, and let us call my another array which will contain my right maxes for a particular index suffix. Okay, now for calculating prefix, ठीक है?
prefix of I कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेक द इनिशियल इंडेक्स as my as same as that of my ARR of 0, because we have to compare each index with the previous index to calculate the left maxes. ठीक है, so what I'll be doing here is मैं थोड़ा आपको बता दूं कि मैं ये चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में, क्योंकि इफ़ यू आर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर हार्ड क्वेश्चन, और ये किसी पीओटीडी का क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब आपने गूगल किया, आपने यूट्यूब पे सर्च किया होगा, तब जाके आपको ये वीडियो दिखी होगी। ठीक है, तो आपको मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में नॉलेज होगी कि आप अगर एक लेफ्ट मैक्स का एरे बनाते हैं कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स से लेफ्ट में मैक्सिमम कौन है। जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, चलो ले लेते हैं, समझा देते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है, वैसे भी मेरी वीडियोस तो कोई कौन ही देखता है। तो देखो, जैसे जीरो है, जीरो को मैंने लेफ्ट मैक्स में स्टोर कर दिया, अब मैं वन पे जाऊंगा, जीरो वन में छोटा कौन है? जीरो, तो बड़ा कौन है? वन, तो मैं लेफ्ट मैक्स बना रहा हूँ। फिर जीरो वन में छोटा अगेन बड़ा कौन है? वन, फिर वन टू में बड़ा कौन है? टू, फिर वन वन टू में बड़ा कौन है? टू, जीरो टू टू, टू थ्री, टू नहीं थ्री, ठीक है, एंड थ्री बन गया मेरा लेफ्ट मैक्स। दिस इज माई लेफ्ट मैक्स। ठीक है, आई हैव टू कंपेयर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू प्रीवियस वन, तो मैं क्या कर रहा हूँ? हर बार प्रीवियस से कंपेयर कर रहा हूँ। तो वही हमने पहले प्रीफिक्स ऑफ जीरो स्टेबलाइज कर दिया है, अब हम यहाँ पे अपना फॉर लूप लगा के कैलकुलेट कर लेंगे। int I equals to 1, 1 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? बिकॉज वी हैव पुट इट अप माई zeroth index to my prefix of 0. Okay, now it will run till n and I plus plus. Now for this, it is simple. Prefix of I will be equal to maximum of my prefix of I minus 1 comma ARR of I. Simple as that. I have calculated my prefix. I have calculated my left max for a particular index. Okay, if I have to find out the left max of index 3, what I'll be writing is prefix of 3. Okay, as simple as that. Now calculating my suffix of I है ना? I think I have written ठीक है, okay, right spelling, okay. Now for this particular thing, what I'll be doing is I have to make my n minus 1th index equal to ARR of my n minus 1th index. ठीक है, shall I explain this to you also? Okay, okay, मेरे को आपने बोल दिया, मेरे को सुनाई दे गया, थैंक यू। तो मैं समझा देता हूँ। देखो, जैसे ये हमें दिया है एरे, तो व्हाट आई डू इज आगे आइए और आगे आइए और आगे और आगे। ओके ओके, मैं क्या करूंगा, हम आई मेक दिस इक्वल। नाउ आई कंपेयर माय वन विद टू, इट विल बी टू। थोड़ा गलत गलत जा रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर आई कंपेयर माय टू विद वन विद टू, तो इट विल बी टू मैक्सिमम। देन आई कंपेयर टू विद टू, इट विल बी टू। देन आई कंपेयर थ्री विद माय टू, इट विल बी थ्री। देन आई कंपेयर वन विद थ्री, इट विल बी थ्री। देन जीरो विद थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। So what I'll be doing is I'll start from int I equals to n minus 1. No, because I have already put my n minus 1th index to suffix, so I'll be starting from n minus 2. Okay, these are all just basic things, okay, which you need to take care of. I minus minus. Now my suffix of I will be equal to maximum of my suffix of I plus 1, आगे वाले से कंपेयर कर रहे हैं ना, and ARR of I. Simple. I have calculated my prefix. I have calculated all my left max and right max. Okay, now what's my another step is? My another step, last step is to calculate minimum of left max, right max minus my particular height. Okay, so final step फाइनल स्टेप कैसे काम करेगा? इट विल बी सिंपल। आई विल बी रनिंग अ फॉर लूप int I equal to dilo to I is later than n and I plus plus. Simple as that. And my answer plus equals to minimum of my left max. Left max will be in the my prefix of a particular index I, and right max, that will be in my suffix of I. Okay, minus my particular height. That's it, and that's it. What I need to do is, I hope it makes sense to you. Okay, so let's try to run it and find out कि ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे, ये काम कर चुका है, बिकॉज ओवर द ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज big O of 3n है ना, and it will be eventually become big O of n. And what will be the space complexity here? It will be big O of 2n, which will eventually become big O of
n. Okay, we because we have used two arrays. Okay, now can we further reduce this time complexity? How can we further reduce this time complexity? I don't know how many of you solve DP problems. Okay, from DP, from recursion to memorization to DP, है ना? To two variables. I don't know, but is there any approach to reduce the space complexity here to solve this particular question in big O of n and with a constant space? Let's try it out and find out how we can do this particular thing in constant space. Okay, let me erase all this code I have written here. Now what I'll do here is I'll simply use two pointer approach. How two pointer approach will work here? Now I'll explain along with my code. Let us calculate first the height. I don't like this. I don't want to type long words. That's why I'm writing ARR. अब तो हाथ बैठ गया ना ARR पे. That's why I prefer ARR dot size. Okay. Now what I'll be doing is I'll be making two variables left and right. Okay, that will store left will again because two pointer approach, left will start from 0 and my right will start from n minus 1, and n is the size of the array. Okay, now again I have to create my answer which I need to return to the function, return to the main function. Okay, and for the left max and right max, let us make two variables. Let us call them as left max, which will initially be 0, and right max, which will also be initially 0. Okay, I'm not initializing them with int minimum because here in this particular question it is mentioned that all the elements present in the array are non-negative, so no need to worry about the negative numbers. That if what else if a particular element is less than 0, it will not happen in this question. Okay, now how will I approach? Okay, the simple thing first we need to understand in two pointer approach that I'll start from left is less than equal to 0, less than equal to right. That's it. Now I will try to maintain left max till I iterate through the array, and I will try to maintain right max till I will complete my array. Okay, depending on the two variable only. Okay, let us compare. Let us have a look at this particular thing. If I talk about this particular index, what will be the left max? 0. If I talk about this particular thing, what will be the left max? 1. If I talk about this particular index, what will be the left max? 1. For this 2, for this 2. Okay, for this 2, for this 2, matlab left max remains constant or changes for a particular index. If I talk about this 3, it will be 2 only. If I talk about this 2, it will be 3, and for all the remaining elements it will be 3 only. That means I do not need to take a array of left max, okay, or to find out a left max for every repetition or every element. What I need to take care is I have to make a left max variable and find out the maximum of current element and the previous left max. That's it what I need to find it out. Okay, so now if my current height of left, okay, is less than equal to my ARR of right. Okay, let us to make this understand better, let us for now take this thing as height. Okay, so that it looks pretty readable. Okay, okay, now if this thing happens, what's the condition written here is that my current height at left is less than equal to my height at right. So what I'll check here is if my height of left is greater than equal to my left max. Okay, if this is the case, then what I'll do is I'll make left max equals to height of left. That's it. Okay, my current height will be my left max. Okay, that's it what I need to do is, okay, because the current height is else if my current height is not greater than left max, I'll simply calculate my answer. That is answer plus equals to minimum of what? My left max comma right max.
Or you can simply say that answer plus equals to what? Max lift max only. Okay, and minus my current height, that is my lift. That's it. That's it. What I need to do here is lift max is, देखो, just try to understand what I have done here is I have done that if this is the case 0 for this no lift max. If I talk about 1, it is the element which is having lift max, so I don't need to calculate answer. I'll be writing lift max equals to height of lift. If I talk about this particular one, okay, a particular index, the lift max is 1. So what I'll do is lift max minus height of lift, that is 0. So answer will be 1. For this particular thing, lift max will be 2 itself. Okay, so this if condition will run, and for this particular thing, the current height is not greater than my lift max. So eventually, I'll calculate lift max, that is 2, minus height of lift, that is 1. So eventually, my answer will be plus 1 again. Okay, so this is my approach for the lift max thing. And at the end of this if else condition, I have to add left plus plus. Okay, and else my height of right is smaller than my height of left. For this also, what I'm going to check is if my height of right is greater than equal to my right max. So this for this thing, I'll make my right max equals to height of right. That's it. Okay, and else if this doesn't happen, then simply put my answer right max minus my current height. That's it. That's it. What I need to do here is, and at the end of this if else later, I'll be writing right minus minus, because I have to put end this two pointer approach, and at the end I'll be returning my answer. Okay. So this is all I can for now code. Let's see what happens. So it is accepting. Okay. Now for this particular question, my time complexity will be big O of n, and the space complexity reduces to constant space, that is big O of 1. So I hope I have make you clear this particular thing. I know the third approach, this particular approach seems to be very a little bit messy to you, but try to inculcate all these things on paper and find it out why the solution works. I have tried my best to explain it to you, because currently I do not use any pen on the laptops. So just try to figure it out. Okay, using some sample test cases. Okay, what happens if my height of lift is not equal to my lift max, then eventually it will store answer plus equals to lift max minus height of lift. I have explained you why. Because for let us take this particular example here, the height is 2. Okay, there is no lift max, so I need to calculate my lift max, which comes out to be 2 here. And for this particular index, I'll be calculating I'll be not calculating my lift max, I'll be calculating answer. That will be lift max, which is 2 minus my height. Okay, simple. And for this particular index, I'll be not calculating lift max, I'll be calculating my answer, that is lift max 2 minus 0, which is the height of the current index. So 2 minus 0 will become 2. Okay, and all this is adding up to answer. So that's it from my side. If you have any doubt, please feel free to ask. Okay, bye bye. Take care. Have a good day and keep practicing.